तेज प्रवासी भारतीय महाकुंभ सजी होती राजधानी 3 दिन धरी राजधानी रे उत्सवर माहौल देखा मिली। प्रवासी माने वर्तमान ओडिशा रे पहुंची सारी भव्य स्वागत संबर्धना जना पाछटी नि विभिन्न प्रकार आयोजन करा प्रवासी भारतीय माने किभली भाव रे 3 दिन विभिन्न स्थान ओडिशार कला संस्कृति विषय अवगत हो पारे, विभिन्न स्थान बुली पारे, से विशेष भाव में फोकस करा एवं यह भितर अनेक कार्यक्रम रही। आज प्राथमिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्घाटन करिसेंती एवं आसंता काली प्रधानमंत्री आसुछंती। एस जयशंकर ओडिशा रे रहिसेंती एवं यहा परे लगातार भाव में वीआईपी वीवीआईपी अतिथिंकर अनेक तमाम व्यवस्था करा जायछि। तेज प्रवासी भारतीय सम्मेलन ए आयोजन भितर गोटे पर गोटे चित्र आम टीवी स्क्रीन में देखाऊँ। काली सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आज स्वतंत्र भाव में प्रवासी माने जो जगार रे सेठी स्वतंत्र खाद्यपेय ओडिया डिश्र व्यवस्था भी करा जायछि। बर्तमान सीधासलख जा भुवनेश्वर आम सहित दक्षिण भारतर मुख्य रंजन आचार्य जोड़ी होती। रंजन, आपण जानवा चाहबू जे आप बर्तमान कौटी अच्छा प्रवासी मैंने तो ओडिशा रे पहुंची सारी ओडिशार जो आतिथ्यता ताकू देखि समान भितर उत्साह नाही नथिबा किभली तांको स्वागत करा देछि, किभली तांको पाछटी निया देछि, कौन कौन व्यवस्था करा देछि तांको पई, कारण दीर्घ दिन धर के आयोजन ए प्रिपरेशन करा जाउथला। कोठी अछंती कौन चित्र देखाइबे? हाँ मोनिका, आपन को कहिर के चाहिबी आपन जेंति कहउतिले अभूतपूर्व सेमानकर उत्साह देखा मिली। वर्तमान आमे आमे अच्छे बर्तमान डायस्पोरा यूथ लीडरशिप रे जो मो कैमरामैन कहबी देखुचंती डायस्पोरा यूथ लीडरशिप सेमाने मध्य सेमाने तांकर निज देशर जो सेमाने प्रतिनिधित्व करूचंती, सेमाने तांकर निज देश केमती इंडिया सहित जोड़ी है बिजनेस डेवलपमेंट करि पारिबे से विषय कथा होचंती। आसंतु सीधासळक आमे जिबा वर्तमान किछि फॉरेनर से कथा होबा। यस सर, वेलकम टू द टेंपल सिटी ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर। सर, यू बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? देखिए, पहले तो हम हिंदुस्तान में, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम हिंदी में बात करें तो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये अंग्रेजी, विदेशों में अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ जी। और अपने देश में भी आगे अगर अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फायदा। मैं यूएई से आया हूँ और जो यहाँ पे जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो यहाँ पहली बार ओडिशा में हो रहा है। आप ओडिशा में कैसे अपॉर्चुनिटी देखते हैं? उड़ीसा में बहुत अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के लघु उद्योग को हम बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे। और ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो एमईए के ऑफिशियल्स हैं, वो एम्बेसडर हैं, सीजीज हैं, ये लोग 3-3 साल के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग भारत के परमानेंट एम्बेसडर्स हैं, जो कि परमानेंट वहीं रहते हैं। और बीइंग एज अ पोएट, मैं तकरीबन अब तक 38 कंट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो जब अब हम यहाँ आए हैं, तो हम जब कहीं जाएंगे तो बिल्कुल हम हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करेंगे, हम उड़ीसा को क्या, हम देश को प्रमोट करेंगे। Because Odisha, people of Odisha know, even government of India try to develop this state. So what sort of thought process you have, sir, to develop this? सर देखिए, आप यस, आपके लिए 2 ही चीजें सबसे बड़ी हैं। एक तो आपका हथकरघा उद्योग जो है, और दूसरा आपका टूरिज्म। आपका पूरी बहुत फेमस जगह है, पूरी आप बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। आप कटक प्रमोट कर सकते हैं, आप भुवनेश्वर प्रमोट कर सकते हैं। तो ये दिस इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। Ma'am, welcome to Temple City of Bhubaneswar. Yes, it's beautiful. You belong to which country? So I have come in from Doha, Qatar, in the Middle East. Okay. Originally from India. I mean, born and brought up in India. My father was a military man, Air Force officer. And I absolutely love what you guys have done here. It's a really wonderful opportunity. First time you have come to Bhubaneswar? First time I've come to Bhubaneswar, but I have come to Balasore with my dad because my father was working with DRDO. And he has come to Balasore for some work. How to see this business opportunities in India, particularly in Odisha, eastern state of India? So one of the things that you have, and yesterday we did a lot of walk around. You have a lot of, so I'm into art, I collect art, and I went and met a gentleman yesterday who makes Patachitra. Yeah. And I bought a lot. I made my husband much poorer. So I believe that the art forms of Odisha should be given a lot of importance. The other thing that we need to do for Odisha is the weaves, the Ikat weaves, which is world famous. And I think the government needs to promote that as well internationally. It's very good quality. And I will be speaking on female empowerment in the next session on the 10th.
And one of the things that we're going to be talking about is teaching the skill sets to women here to do something about it. Okay. Thanks a lot. Thanks. Enjoy yourself. Sir, you belong to which country? You are an NRI? I'm an NRI. I'm from here, Bhubaneswar. अच्छा आप भुवनेश्वर से हैं Salil Panigrahi, namaskar. I'm sorry हाँ अच्छा ଆପଣ सर କେମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର ଯୋଉ ହଉଛି 18th ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର Hopefully it will open up new opportunities in Orissa. There's a lot of NRI community who are coming. I'm sure there is a lot of, they will see Orissa on in a lot of ways on industry, tourism, etc. And maybe there'll be new opportunities. Yeah. Good luck. sir. Good luck. Thank you. Sir, I think you're one of the young panelists there. You're on the dais. So you please introduce yourself, sir. Thank you very much. Namaskar. I'm Don McLean Gill. I'm a Filipino of Indian origin. So I'm a lecturer at De La Salle University, and I specialize in India, Southeast Asia security relations and Philippine foreign policy. Okay, we were just listening to your speech. You are really fabulous connecting India as well as your states. How do you see these opportunities here, business opportunities as far as India is concerned, and particularly first time in Eastern India, Odisha, we are in Bhubaneswar, we are going to 18th Prabhasi Bharatiya Divas going to be, happening here. So what sort of thought for this, sir, for Odisha? Well, thank you very much. And I think Odisha is a thriving state, of course, and it is a vital element in India's growth. And of course, when we look into the business and economic prospects, I think there's a lot of opportunities now given the growing interest between India and the Philippines to enhance their cooperation together. So I think that this is an opportunity for both sides to explore what else could be done. And I think that the appetite for improving and expanding relations is there. And with the vision of India now, I'd like to say that it has empowered every son and daughter of India, in India and around the world, such as myself, to contribute significantly in any way. So one more thing now, our visionary leader like our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, he has a lot of vision for this India to be a global to have a global presence. So what sort of thought for this in a state like Odisha, sir? Absolutely. The vision of Prime Minister Modi ji is in fact very inspirational, not just for India, as I mentioned, but for the rest of the developing world. Countries like the Philippines, we don't look to other countries in the West or China for developmental models. We look at India. And Odisha, of course, given the significance of the state, would definitely be part of this developmental story, and something that I hope would be able to enhance cooperation with private and public sectors in Southeast Asia as well. We hope there will be definitely in your presence, there will be a lot of opening between the state of Odisha as well as Philippines. Have your stay here, enjoy your stay here, sir. Thank you, sir. Thank you. Asanto agu jiba kotha but sir, you belong to which place? UK. UK. We're born in Mumbai, but Okay. we live in UK. अच्छा, how do you say this? कैसे आप देखते हैं कि यहाँ का जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो यहाँ का जो ओडिशा का जो अपॉर्चुनिटीज है, आप कैसे देखते हैं? ओडिशा को लेके, इंडिया को लेके कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है। प्रवासी दिवस में आने का हेतु ये होता है कि जो रीजनल कल्चरल चीज़ें हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो कमिंग टू ओडिशा वी बीन विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस अराउंड, अभी पुरी के दर्शन किए कल, बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड सेटअप हियर एंड टू लुक एट सच गुड पैनलिस्ट्स, इतने हमारे मंत्री, कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। What do you do there, sir? In UK, what sort of business or what business venture you have? So in UK, socially we run a student organization called INSA, Indian National Students Association. We are the largest student organization of Indian students outside India. तो हमारा वो है और बाकी दूसरा मेरा बिजनेस वगैरह है। Okay, thank you, sir. Okay. Asanto, hi. Hi. I'll Asanto, ଆଉ କିଛି କଥା ହବ? Excuse me, sir. We are here from News 7 Bhubaneswar. Will you say, sir? Okay. Asanto, Samar, yes, sir. Hello. You belong to which country, sir? No, I am from India itself, but came from UK in before 6 months. Okay. So we are here to represent our cybersecurity company called as 42 Labs, which is working with Indian Defence. And Indian Defence is actually using for transferring and securing data from using our platform. And we are here to meet Mr. Narendra Modi. And this is where I think so the setup and the entire arrangement is great.
So we are just looking forward for him to meet tomorrow and have a discussion. Is there your first visit to Odisha? Yes, my first visit. How do you see their ambience here? How do you see this This is people fantastic. This is fantastic. I mean, I cannot appreciate more because the arrangement, the way things are, kind of created here from the cultural aspect as well. It's Okay. fantastic. It's fantastic. ओके सर निश्चिंत भाव में सीधासख प्रवासी सहित आलोचना सीधासख करुले रंजन एवं लगातार भाव में प्रवासी माने जितेबाला ओडिशा रे पहुंची ओडिशा रे तांकर आतिथ्यता देखी से बेस खुशी जाहिर करछन्ती एवं आगको मध्य ओडिशा रे निजर पुंजी इन्वेस्ट करबा पई बा पुंजी निवेश करबा पई मध्य आग्रही काली प्रधानमंत्री आसवा परे तांकर कोन उद्बोधन रहुचे ता ऊपर मध्य नजर रहिबो एवं ये सीधासख दृश्य आमे देखाउछु विभिन्न स्थानरू वर्तमान रश्मिता आम सहित जोड़ी होउछन्ती एयरपोर्ट परिसर रश्मिता आपण एयरपोर्ट परिसर कोन दृश्य देखाइबा को चाहिबे कारण प्रवासी माने जनक परे जणे जेतेबेले ओडिसा रे आसी पहुंचुछन्ती सेठी ओडिसा रे तांको स्वागत करा जाउछि तांको पाछोटी निया जाउछि विभिन्न होटल ले तांकर लगातार व्यवस्था भी करा जाइछि एयरपोर्ट परिसर कोन व्यवस्था करा जाइछि देखो तो मोनिका जेहेतु कहवा भुवनेश्वर एयरपोर्ट हूँ प्रथम जोटी कि प्रवासी मैंने आसुच्च भव्य भाव में स्वागत कर देखिपुं बर्तमान एयरपोर्ट रे जो प्रकार व्यवस्था रही आम आपको देखुलु कि प्रवासी पहुंची आम प्रथम प्रतिक्रिया नवा आपको चाहिए भव्य स्वागत करवा जो घोड़ा नाच कोणार्क रही आम आपको देखू किंतु प्रवासी मैंने किसी जन आसिक पहुंची से कौटू आसी आम प्रथम प्रतिक्रिया नवा चेष्टा करवा अलग ये मैडम आप लोग कहाँ से आए हैं English. I speak English. मैम यू हैव कम हियर टू अटेंड प्रवासी भारतीय प्रोग्राम Yes, I did. फ्रॉम व्हिच प्लेस यू आर I'm from South Africa. ओके सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू आर बीन इन I have not been to Odisha before, but I've attended the previous one. I've attended most Parvasi Bharatiya Devas, so this is my maybe eighth. It's your eighth It's and my eighth. first time in Orissa. First time in So Odisha. what would you like to say about the Orissa's culture and the way they welcome you? The welcome was very warm. Wonderful welcome from Odisha and the people. I'm looking forward to my stay here and to learn about the culture and the people and enjoying the convention. So these 3 days you are going to visit many places in Bhubaneswar and in Orissa. Yes, we are definitely going to do that. How many people are with you? My delegation now is 5 of us, but everybody's traveling separately. So we have a delegation from France, Mauritius, and South Africa. How many of them are there total? 5 has arrived now. Previously, there's more that has arrived. We belong to an organization called Global Indian Organization, GIO, and so we've come part of a delegation from GIO. साउथ अफ्रीका से आसी अन्य किसी प्रवासी सर आप कोठू आसी सर आप कहाँ से आए हैं You speak English. From which place you have I come from Mauritius. Mauritius. Yes, I come from Mauritius. In fact, we have seen that the 35 people from Mauritius they visited today morning and they reached Yes, here. yes. And how many are there from with you? I don't know. Now I am a member of the Global of Indian Organization. The president coming from France, Mr. Mahan Poinusami. You have come here to visit Prabhasi Bharati program. No, I have not visited. I come here Okay. in some minutes ago. Yeah. हमें आउ किछि जन I joined the private Divyas with my wife, Bhuma Devi Agasen. Yes, my wife. Ma'am, you have come here to visit Prabhasi Bharati program. Yeah, So, how much you are excited to come to the India and visit the I program? wanted to see how it is. That is why I come. It was since my childhood I wanted to come here. Okay. Yeah. Since So my childhood, dream- you have heard about Orissa. No, Orissa, yeah, of course. That is why I come here to visit What how, are the things you have heard and you want to explore here? especially in the film, Indian film. I like to watch Indian film. So I heard the name. So my dream is at least release whatever I thought in my childhood. Yeah. ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ପିଲା ଦିନରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି एक्सप्लोर କରିବା ପାଇଁ सर कहाँ से सर आप आए हैं फ्रांस से हूँ फ्रांस से अच्छा पेरिस से सर क्या कहेंगे भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आप आए हैं तो किस तरह से कितना एक्साइटेड है आप वो यहाँ के हम लोगों को बहुत खुशी आ रहे हैं क्योंकि हर 2 साल अभी हम यहाँ आते हैं इंडिया
क्योंकि वैसे हमको प्रवासी बन गए, जैसे महात्मा गांधी फिर वापस आए थे 9 जनवरी का, हम लोग ऐसे ही कहते हैं इंडिया को। रश्मिता में के दृश्य देखुले एयरपोर्ट परिसर जोटि के भव्य व्यवस्था करा जनक पर जड़े प्रवासी जिते आसुंच स्वागत केमती केमती पाछटी निया ये तमाम व्यवस्था एयरपोर्ट परिसर करा से चित्र आप देखा लगातार भाव में। धन्यवाद सूचना रश्मिता दास आम सहित लगातार भाव में एयरपोर्ट परिसर जोड़ी होते।